Okay, guys, majority people have rejoined, so let's start. Someone asked me, texted me, what is IS team? So, guys, do not wait if you do not understand anything here. No question is a silly question. So, if you don't understand anything, feel free to ask immediately. Don't wait, right? So, it will come in recording also, and it will help others also. Anyone knows what is IS team? When I say the approval of IS team, anyone knows what is IS team? Can I tell? Yeah, please. Hello. Yes, you can. Guys, can you hear me? Hello. Yes. Yusuf, can you hear me? Anyone else, guys? Anyone knows what is IS team? Internet And service. looking, sorry, what? Internet service. No. Anyone else? Local support team. Yeah, what is IS team? ये ना localized team infrastructure team. Not really. Yeah, it is a local team, obviously, but IS मतलब information security team. कोई नहीं आपके Okay. environment का जो information security team जो handle करता है ना, that is your IS team, information security. They will check कि यार ये सर्वर बनना यहाँ पर सही है या नहीं है, इससे कोई वायरस आने का तो खतरा नहीं है नेटवर्क में, समथिंग लाइक दिस. Whatever parameters they have, they will do it. ठीक है, because let's say that the request says कि आपको एक सर्वर बनाना है and you have to keep port 80 open in that. Your job is just to create and keep the port open. What if a Trojan comes using that port? What if a virus comes using that port? Who's responsible? You, because you created that, or owner because he asked you to do that? Owner will say, how would I know कि उससे Trojan भी आता है, उससे कोई virus bhi aata hai. You should have told me. You will say, how would I know, right? So to skip that, we have an IS team. तो जितने भी security related threat वगैरह होते हैं, before a request comes to you, एक task उनको भी चला जाता है, and they will say कि इसमें ये बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, approve or decline. And if they're declining and application owner says कि नहीं यार ये मेरे application के लिए जरूरी है, so before it comes to you, they will figure it out. आपस में वो लोग figure out कर लेंगे कि ठीक है मैं CEO का अप्रूवल लेकर आता हूँ, CTO का अप्रूवल लेकर आता हूँ, that if we have to run business, we have to have this port open. वायरस से कैसे डील करना है, you figure it out. That is what you guys are here. That is why you are getting paid, right? You figure it out. Don't ask me to close my port. I am gonna keep this port open. How to deal with viruses, you figure it out. किसी भी केस में no matter the request, they command them, whatever they do it, they will do it. Application will do it. And if IS team, they have to decline it, they will decline it. It's up to them completely between those two teams. Whenever you get the request, IS team का approval होना चाहिए. Simple है. How to get that approval? It's up to them. वो VP level तक जाते हैं, CTO level तक जाते हैं. They provide some support documents, Microsoft के supported documents कि this is not a threat वगैरह. Whatever they want to do it, application will team do it. IS team का approval आपके पास होना चाहिए. Is it clear? Before you create anything. किस फॉर्म में हो सकता है? It could be a simple email also. IS team से email होता है. ठीक है, this request is approved. वो email PPT या PDF में होता है. आपके tickets में attach होता है. That's all you required. Clear है? Yes. Okay, check if DCA was completed by IS team. Again, none of your job. आपके पास IS team का approval है, मतलब detailed security assessment उन्होंने किया होगा, तभी आपके पास approval है. You will just check IS team का approval है या नहीं है. That's all. ठीक है. Then once and everything order we set up, we call the application owner. We discuss the scope of assessment. Okay, so let's skip this one. This is for architecture team. In between we do schedule calls, meets. Okay, ये आप बोल सकते हो. In between का क्या मतलब हुआ? The moment you get the ticket and while you're creating or deploying, it does not mean किसी enemy के लिए नहीं बना रहे हो आप, या किसी और थर्ड पार्टी के लिए नहीं बना रहे हो, that you won't have any discussion. बस आपके पास काम आ गया, रोबोट जैसा काम करोगे और छोड़ दोगे. No, that is not the way. एप्लीकेशन टीम का बंदा कई बार आपके बाजू में ही बैठा होता है. यू सिंपली गो टू हिम, गो टू हर एंड चेक, यार ये रिक्वेस्ट आया था, व्हाट डू यू मीन बाय दिस, समझ में नहीं आ रहा है, राइट? फ्रेंडली वे में. वंस इट इज क्लियर, तो उसको बस एक बार ईमेल पे ले लो. Okay, I'm just gonna send an email as discussed that you asked for Windows 2008, लेकिन 2008 तो बंद हो गया, so I am giving you Windows 2012.
जो हमने वर्बल डिस्कस किया बस उसको एक बार आप राइटिंग में ले लेते हो. दैट कैन बी डन यूजिंग टिकटिंग टूल एंड दैट कैन बी डन यूजिंग ईमेल्स आल्सो. किसी भी तरह से बस राइटिंग में आना चाहिए, राइट. दिस इज वन वे. Let's say you're sitting in Bangalore, client is in Pune, or you are in Pune, client is in Bangalore, right? Then how would you do it? Teams, calls, emails, किसी भी तरह से simple. So it's not like that कि एक बार आपके पास टिकट आ गया तो सब कुछ उसी में होगा. That's not the case. काफी बार काफी information missing होती है. They have asked you to create a server, subscription वगैरह सब कुछ दे दिया और server का नाम ही नहीं दिया. Will you choose a server's name by your own? No. You'll simply update the ticket or email ping or that ping that person और आप एक बार ले लोगे नाम. That's all. Clear है? Yeah. Okay. So this is not for you guys. जितना भी मैंने बताया है बाकी उसको आप लोग ये कर लो. OPEX वगैरह completely not for you. Leave it. Okay. हाँ, नेमिंग कन्वेंशन आई हैव बीन टेलिंग यू कि जब भी आप जाते हो ना नेमिंग कन्वेंशन वगैरह इस तरह से होता है. सी इफ योर कंपनीज नेम इज आइस देन यू क्रिएटिंग अ सबनेट तो इस तरह से कुछ नाम होगा आइस बैकएंड. ये हम बैकएंड के लिए एक सबनेट बना रहे हैं 01 सबनेट है इस तरह से एप्लीकेशन गेटवे सबनेट. तो नाम वगैरह से जो ना आपको सारी डिटेल आती है एलएलडी में. दिस इज जस्ट फॉर योर एग्जांपल. यू कैन कम हियर एंड चेक वंस. इस तरह से छोटी छोटी मोटी डायग्राम भी आपके पास आती है एंड दिस इज द बेस्ट वे आई हैव शेयर इट विद यू. ये दोनों में से सारी दोनों भी जो है एग्जांपल के लिए बनाई हुई है. एक्चुअली एलडी आई सी इफ आई कैन गेट वन फॉर यू बट उस पर मुझको काफी सैनिटाइजेशन करना पड़ेगा. व्हाट इज सैनिटाइजेशन? कि जो मेरा एक्चुअल लो लेवल डायग्राम है ना दैट आई कैन नॉट शेयर विथ यू. व्हाई? उसमें मेरे क्लाइंट का नाम होगा, उसमें मेरे क्लाइंट के आईपी एड्रेसेस होंगे. दैट आई कैन नॉट शेयर हियर इन रिकॉर्डिंग एंड विथ यू. आई कैन नॉट डू दैट. सो आई विल हैव टू रिमूव एवरीथिंग एंड देन शो इट टू यू. तो उसके बाद वैसे ही आपको कुछ समझ में नहीं आएगा. सो इट्स बेटर दैट यू लुक एट दिस रफ फिगर एंड गेट एन आइडिया. किसी तरह की डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके पास आती है इसके साथ एक पीडीएफ या पीपीटी भी अटैच होता है जो सारी इन्फॉर्मेशन को एक प्रॉपर टेक्स्ट फॉर्मेट में आपको करके दे देगी. सो दिस इज हाउ गाइज यू हैव टू एक्सप्लेन योर टीम योर करंट प्रोफाइल. राइट? क्लियर है यहाँ तक? Yes. Okay. Now, these are technical questions, so let's leave it. Scenarios को हम टेक्निकल वाले में ये करेंगे, ठीक है? We are just focusing on the resume part. So I guess we are done with the resume part. I mean the storytelling part. I'm coming back to the resume now. So this is what I have for resume. I told you guys, format is not what I'm talking about. Feel free to choose whatever format you like. You want this one, I'll share this one with you. You want to create in your own format, I'm happy with that. I am talking about the content here. आपका नाम, certification, whatever you have done should be here. Technical analyst. Now the technical analyst is a designation. Now if you see Sybase का technical support engineer, ऋषि का designation technical support engineer, किसी का होगा software engineer, किसी का software support engineer, किसी का associate, कुछ भी हो सकता है. So don't worry about it at all. Don't worry. Even if it is sales का भी होगा ना, then still don't worry about it. Forget it. जो भी designation है keep it and bracket में लिख दो cloud engineer. ठीक है? How to explain? I'll tell it to you. ये उसी के साथ होगा जिसके पास काफी एक्सपीरियंस है, राइट? जिसका कम एक्सपीरियंस हम उसको वैसे ही क्लाउड पे बता रहे हैं. एंड आई टोल्ड यू कि इंडिविजुअल बेस पे हम फिर कनेक्ट करने वाले हैं. सो किसी का एक्सेप्शनल केस है, विल सी हाउ टू शो इट इन योर रिज्यूम. बट नॉर्मली इफ यू आर टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर, टेक सपोर्ट एनालिस्ट, टेक सपोर्ट सर्विस डेस्क इंजीनियर, L1 इंजीनियर, एसोसिएट वगैरह कुछ भी होगा, राइट इट डाउन लाइक दिस. ब्रैकेट में लिख देना क्लाउड इंजीनियर. स्पेसिफिकली लिख, और ज्यादा स्पेसिफिक होना लिख देना Azure क्लाउड इंजीनियर. ठीक है? Here you can mention the total years of experience and experience with Azure. पहली लाइन में Azure का experience लिख लो, extensive experience 4+ year as Azure Microsoft Azure Administrator with 6+ years IT experience. Total experience 6 साल का है, ये जिसका भी resume है उनका, and then 4+ इनका Azure पे experience है. ठीक है? तो मतलब 2 साल कुछ और किया है. So what have you done on these 2 years? So they SAP वगैरह ये सब किया है इन्होंने. ठीक है? Here you can type your email ID, number, skills. Again I'm telling you it doesn't have to be in same format. आपको skill कहीं और चिपकाना है, कहीं कुछ और करना है, feel free, but this content should be there. Skills, Azure infrastructure as a service, ये एक skill में बहुत सारी चीजें कवर हो गई. वर्चुअल मशीन, VNet etc. ये सब आपका कवर हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर में. PaaS services we are going to do, migration we are going to do, Azure Active Directory we are going to do, Azure monitoring we are going to do. Landing zone setup अपने आप हो जाएगा जब हम Azure migration करेंगे. And whatever we have been doing now, landing zone setup is nothing.
बस आपके माइग्रेशन से पहले ये सारी चीजें बनाकर रखना, वीनेट, रिसोर्स ग्रुप, आरबैक वगैरह, सो लैंडिंग जोन सेटअप हो जाएगा। PowerShell automation, we have already done that session, जहाँ पे आप PowerShell से एक मशीन बनाते हो, right? In Azure storage, we are going to do it. So इतने skills I want to keep in your resume. इसके अलावा whatever you have, if anyone has done AWS का थोड़ा बहुत आता है, feel free to just go here, type AWS, जो भी आपको आता है, right? किसी ने SAP किया है, do that. किसी को Windows आता है, type that. Someone knows Linux, do that. Someone knows, let's say, SQL, do that. Getting it? बट Azure का यहाँ तक ये डेफिनेटली होने चाहिए इतने आपके इसमें। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ओके। नाउ दिस रेज्यूम गाइस, दिस रेज्यूम इज प्रिटेंडिंग कि एक ही वर्क एक्सपीरियंस है, ठीक है, टोटल एक वर्क एक्सपीरियंस है। सो हाउ दिस पर्सन इज प्रिटेंडिंग दैट दिस पर्सन हैज वर्कड एज अ टेक्निकल एनालिस्ट from 20th of December 2016 till date in UT-Kloud. This could be any name. I've just given my company's name. Okay. So let's say that इस बंदे 2016 से अब तक का काम किया है. So now here this person is saying कि I have not worked on Azure completely. पहले मैंने किसी और प्रोफाइल पे भी काम किया. So whatever you are showing या जो भी आप बताना चाहते हो, let's say आपका बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, 5-8 साल का है ना, so don't show it completely on Azure. Azure का हम 2 या 3 साल से ज्यादा नहीं बताएंगे. बाकी का सारा एक्सपीरियंस वॉट एवर यूर डूइंग एक्चुअली उसमें डाल दो, यहाँ पर समथिंग लाइक दिस, नेक्स्ट वाले पेज पे या सेम इस पे, वहां पर जो भी आप कर रहे हो आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाल दो। ये इररिलेवेंट एक्सपीरियंस हो गया, नो वन इज गोइंग टू आस्क यू, बट इट शुड बी देयर। छोटा भी कर सकते हो उसको, ठीक है। ये वी जस्ट वांटेड टू फिल द पेज, आई वांटेड टू शो इट टू यू, इसलिए इतना डाला है। इसको आप 5-6 लाइन में भी कवर कर सकते हो। देन करंट प्रोजेक्ट आप बताओगे दैट यू आर वर्किंग विथ द सेम ऑर्गेनाइजेशन, करंट प्रोजेक्ट, टीम साइज 4+ बता देना, वी ऑलरेडी डिस्कस टीम साइज, ठीक है। एंड देन योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मैनेजिंग Azure subscription and resources, we know what is this. Deployment and managing virtual machines, we have deployed multiple machines by now. Configuration and management of virtual networks, we have been doing that since 2 sessions and आने वाले सेशन में भी हम करने वाले। Azure network experience, VPN and express route, traffic manager and load balancer. Load balancer we have done, I've asked you to read about traffic manager. Express route I will show, VPN we are doing tomorrow, बाकी नेटवर्क का VNet वगैरह हमने कर लिया। Responsible for system and application performance monitoring, this I will show it to you. VMSS deployment, this we have done in very detail. The moment you say VMSS deployment you have done, guys, this is the place आपके questions आना शुरू हो जाएंगे। Okay, so you have done VMSS deployment, tell me what is VMSS, then you have to explain जितना भी हमने किया है, whatever we have been doing here. Let me open that again and let's go to January batch. If you see यहाँ पर VMSS के मैंने सारे questions whatever we have done यहाँ पर मैंने दे रखे VMSS के क्वेश्चन, जैसे जैसे हम लोगों ने किया था, एक्सप्लेन VMSS, एक्सप्लेन HA, राइट, और यहाँ पर हम लोगों ने प्रैक्टिस भी की VMSS की। this is what you have to explain them when you say I have worked on VMSS. इस तरह से आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्या टास्क आते थे, एंड दिस इज व्हाट आई यूज्ड टू डू। मुझको थ्रेशोल्ड वगैरह आता था, ये आता था, टाइम बाउंड है, मैट्रिक्स बाउंड है, व्हाटएवर इट इज, you will have to explain it. VMSS we have done it in very thoroughly. Bastion we have completed, all of you guys have done it, right? सबने होमवर्क भी किया, सबने टास्क भी किया। VNet peering we have done it. Hub and spoke, we are going to do it maybe tomorrow or day after tomorrow. बहुत सिंपल है। VNet peering आता है तो hub and spoke में it's just the theory पार्टी पढ़ना आपको, प्रैक्टिकली दोनों सेम होता है, जैसे लोकल और ग्लोबल है उसी तरह से VNet peering, right? Responsible for managing network storage in Azure. Storage we are going to do, working on portal and through PowerShell, this we have done it. Working through portal मतलब portal पे आके आप VM VNet वगैरह बनाते हो, through PowerShell मतलब PowerShell के through आप virtual machines वगैरह बनाते हो। So we have seen it, right? All of you, do you guys remember? If you don't remember, go to this file Azure Compute. यहाँ पर I have shown it to you. How to connect using PowerShell, how to create, and I'm sure all of you guys created PowerShell से एक machine भी बनाई थी हम लोगों ने, right? I hope you remember. I hope you guys are practicing, not forgetting anything. All of these are going to come back to you now. Responsible for managing network storage, that's this we're going to do. Implement high availability solution using load balancer, application gateway and traffic manager. So I told you application gateway and traffic manager आपको सिर्फ पढ़ना है, किस तरह के questions आते हैं वो भी मैंने बता दिया। Trust me, based on my these many interviews जितने मैंने लिए हैं या फिर यहाँ पर लोगों ने आकर दिए मेरे sessions में, यहाँ पर training room से, they have not asked anything which is out of this box. तो ये बॉक्स आपके सामने है तो आपके सारे आंसर यहाँ से आ जाएंगे, राइट? एंड व्हेन इट कम्स टू डिप्लॉयमेंट, लोड बैलेंसर हम सब ने डिप्लॉय करके देखा है, प्रैक्टिकल किया है। सो प्रैक्टिकल वाले इंसिडेंट्स यहाँ से सुना देना, थ्योरेटिकल पार्ट उस बॉक्स से आपको याद करना है।
then VM migration, we are going to do the migration. You have to say that in a project we migrated 30 virtual machines from VMware to or from Hyper-V to Azure. How to do it? We are going to cover that. Is it clear, guys? Yes. Now this is for Yes. someone जिसका एक single experience है, जिसका double experience होगा, multiple companies हो गए, nothing, simply इसी को copy paste करके आप ये कर दो, copy paste करो, एक तीसरी कंपनी आपकी बना दो. It should not be more than 2 pages, guys. आपका resume, no matter what you're doing, fix it. Your problem, how you do it. Do not extend it. Let's say that यहाँ पर मुझको बताना था कि 2014 से 2016 तक मैं काम कर रहा हूँ. So this is how you can show it. Company name वगैरह obviously आप change करोगे, right? फॉर्मेटिंग वगैरह अच्छे से कर लेना सब कुछ. यहाँ पर लेट्स से 2016 तक आपने काम किया, ठीक है. सो दिस इज योर वन कंपनी. हमेशा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपकी ऐसे हो कि लेटेस्ट वाला ऊपर होगा, ठीक है. सो सबकी सबसे पुरानी कंपनी आपकी यहाँ पर होगी, लेटेस्ट वाली कंपनी ऊपर होगी. लेटेस्ट कंपनी में भी काफी लंबा एक्सपीरियंस है, 2 प्रोजेक्ट बता रहे हो, सो दिस इज हाउ यू विल शो इट. सिंगल प्रोजेक्ट बता रहे हो तो दैट इज फाइन, एक ही प्रोजेक्ट में सब कुछ कवर कर लो. एजुकेशन का भी इसी तरह से होगा, जो भी आपका हाईएस्ट एजुकेशन इसको ऊपर रखो, देन सेम ऑर्डर में नीचे जाते जाओ. क्लियर है गाइस? क्लियर टू एवरीवन? Marital Yes. status, DOB वगैरह, it's up to you. You want to keep it, don't keep it. Location डाल देना बस पुणे, detail address की जरूरत है नहीं. Rest is up to you. This is for experienced people. Is it clear to everyone? Yes, all right. Coming back to Yes. fresher. वैसे हमारे पास fresher है नहीं ज़्यादा. If there are, we'll discuss with them separately. But यहाँ पर जो भी freshers जो apply कर रहे हैं, right? You guys can mention here that you have pursued a course or you are pursuing a course with UT-Kloud and you are working with them as an intern. ठीक है, सिंपल यहाँ पर ऐसे ही रखना आपको, बस यहाँ पे ये लगा दो आप, intern क्लाउड इंजीनियर, और जो भी डेटा आपको डालनी है यहाँ पर डाल दो. उसके आगे सेम रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप करोगे, सेम चीज आप एक्सप्लेन करोगे जो एक्सपीरियंस पीपल एक्सप्लेन कर रहे हैं. ओनली थिंग यू विल से हियर कि विद दिस इंस्टीट्यूट आई हैव कंप्लीटेड 3 months, एक मैंने कोर्स कर लिया इजी 104 का इनके साथ, एंड नाउ दीस गाइस आर प्रोवाइडिंग मी a freelancing job. I do not have any offer letter, I do not have any salary slip. I get paid sometimes cash, Google Pay वगैरह, बहुत ही बेसिक छोटा सा सेटअप है. I work from home most of the time from my laptop, right? छोटे छोटे टास्क मुझको असाइन होते हैं, ईमेल पे आते हैं कभी कभार वो टास्क, उस तरह से I work and I get paid. That's all I do. That's all you have to say. What kind of task? Task similar होंगे, ठीक है. What kind of client? You never take client's name. You will say UT-Kloud, they have their own client, they just give me some work. And guys, after the training, if I see someone is really working well, I have some freelancing projects also, I can literally give it to you. But जब तक वो नहीं भी मिल रहा है, you can say it in your interview. अगर आपके पास बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं, you can say it. And again I told you, we are going to discuss on one by one. जिसके भी कुछ exceptional cases हम one by one भी discuss करने वाले हैं इंटरव्यू से पहले. But here I want you to next week I'm not in India, you know, so I will be skipping the classes, not tomorrow, upcoming week I'm talking about, right? 23 and 24. So we are not having the sessions on those days. So this complete week I want you to prepare your resume and prepare your Naukri profile. Let some calls come. Okay? Now we'll come to the Naukri profile also. But is it clear to everyone till here? कुछ questions इसमें पहले वाले प्रोफाइल में किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है? Yes. Anyone guys? Designation, job profile. Okay, designation एक अलग चीज हो सकती है. Designation आपका टेक सपोर्ट एनालिस्ट हो सकता है, आपका जॉब प्रोफाइल क्लाउड हो सकता है, ठीक है. सो डोंट हेजिटेट एट ऑल. कई कंपनी में ऐसा होता है, सो डोंट हेजिटेट बिल्कुल भी उसमें बोलने के लिए. टीम साइज, वर्क एलोकेशन कैसे होता है, शिफ्ट्स वगैरह आप बोल सकते हो, मल्टीपल शिफ्ट है या आप बोल सकते हो सिंगल शिफ्ट है. नॉर्मली डिप्लॉयमेंट वाले काम में सिंगल शिफ्ट ही होती है, राइट, बिकॉज कोई भी प्रोडक्शन इन्वायरमेंट नहीं है उसमें. टिकटिंग टूल की हमने बात कर ली, हायरार्की मैंने आपको बता दी कि लीड आर्किटेक्ट होगा, सोल्यूशन मैनेजर वगैरह होगा, राइट. Any doubts guys, anything till now before I move to the portal? Feel free to ask. No, sir. Okay, so let's move ahead and then Well, I have a question here. yes, How the resume would be for product-based companies? doesn't matter. You just Doesn't say matter. that's it's your internal internal clients जिनके लिए आप application के लिए काम कर रहे हो.
and no one knows. See guys, even if it is a product based company, कई बार product based company भी किसी और के लिए भी काम करती है, right? No one has that access कि वो आके check करेगा, और आपको product based company के लिए बताना है, so say it कि ठीक है, I'm working for a product based company, और instead of client use application owners. ये जो हमने client यहाँ पर discuss किया है ना, instead of client you can say application owners. Here instead of client you say कि हमारे पास मल्टीपल एप्लीकेशंस थे, मल्टीपल एप्लीकेशंस के लिए काम कर रहे थे, हर एक एप्लीकेशन का अपना अपना टेनेंट था, या फिर सिंगल टेनेंट था, हर एप्लीकेशन का अपना अपना सब्सक्रिप्शन था. इट्स अप टू यू कंप्लीटली हाउ यू वांट टू से इट. ठीक है, Got it. Got it. ओके. एनीवन एल्स गाइस, कोई क्वेश्चन? रेज्यूम, स्टोरी, Sohail, I एक्सप्लेनेशन. want to know hello. या शिखा, Yeah, टेल मी. Sohail, I want to know regarding mock interview. Like, We are going to do uh, that, but as of now you guys are not ready for the mock interview. We'll do that, don't worry. okay. Once all the technical topics are covered, we'll do the mock interviews. As of now, I want you to prepare your resumes, prepare your Naukri portal and everything. And meanwhile, now we are just at the end of the sessions. थोड़े दिन में 3-4 वीक में खत्म हो जाएगा हम लोगों का सब. We are going to do the mock interviews. Don't worry. Okay. Is guys anyone else? And for your mock interviews also, I want you to use your actual resume जो आप Naukri पे upload कर रहे हो, वो actual resume use करना है mock interviews में भी. I'll arrange the panel. People who are working with me, people who got trained from me and now they are taking interviews, so I'll arrange from them कोई Saturday Sunday time slot वगैरह ये करके mock interviews हम लोग arrange कर लेंगे. Any other questions guys? Sohail, like Yes. You have showcased your Microsoft certification, right? So Right. is that an advantage? Definitely yes, it is. बहुत बड़ा Because, advantage है. I'll tell you why, yeah. how it works. Yeah, complete your questions and I explain it then. Okay, let's say if someone has a CTC of 17 or higher, right? Mm-hmm. So that person will definitely expect something more, right? So Right. we will get that much, or do we have a fixed amount that will be given for admin? Market, I got your question, I guess. The market range for admin is from 12 to 30. 12 LPA to 30 LPA. This is the range. 12 LPA to 30 LPA. This is the range for Azure admins I'm talking about, guys. Now depends on your experience, depends on how you clear the interview, depends what all skill set do you have. I have seen people from my previous to previous batch going from 8 to 20. So a range is definitely there. Don't worry about it. If someone is on 17, I understand no one is going to go downgrade and no one wants to join on the same package, right? So you can expect, this is definitely range is there. So you can expect it. Okay. Coming back to the certification question. Certification, yes, it helps a lot. How it works, I'll tell you. Let's say that as an architect, I'm working with a client. Okay, I have developed a diagram for them. I have developed a solution for them completely. Me and my team spent 3 months and 4 months, and they have a huge setup of 40,000, 50,000 servers, and we deployed a diagram. Everything was done. It was approved by the client. They're happy with our diagram. Our project done. As an architect, my job is done. Okay. Now, the challenge here is, to complete the implementation of our diagram. They have 50,000 servers. We have given them a plan कि आप पहले 30,000 को migrate करो, ऐसे करो, वो करो, ये करो, use that service, use this region. Based on my experience, I'm suggesting you this XYZ. A detail 200-300 पेजेस का रिपोर्ट हमने सबमिट कर दिया. क्लाइंट के आर्किटेक्ट ने पढ़ लिया. मैनेजमेंट, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ टेक्निकल ऑफिसर, they have read it, they are happy with it, they have approved it. Now the question is implementation, how it works. Let's say that if I am working with Deloitte, for example. Okay, so Deloitte has a team. Ignore the spelling and caps, guys. This keyboard works funny when I share my screen. So when this client is talking about implementation, client will approach the same team. जिनकी architecture team थी, they will say, do you have implementation engineers? Will say yes. What is the price? So and so dollars per hour. Okay, इतना project इसके लिए इतना time लगेगा. This could be our billing. Client says, no, this is too much. Let me go to some other company. Maybe they're going to IBM, they're going to TCS, they're going to some small company, Blaze Clan, जो उनको और सस्ता सा ये देंगे. And client will take the
quotation from them also, right? जहां से भी client think that it is a suitable company for us for implementation, so then the client will start. Now 50,000 server मतलब एक 3 से 4 साल से भी ज्यादा एक लंबा टाइम चलेगा migration, right? So client in this case will say, okay, fine, I want some implementation engineers, whatever. And here the architecture team जो diagram वगैरह देता है ना, इसमें number of implementation engineers, number of hours, सब कुछ देना पड़ता है हमको डिटेल में, कि इसमें कितना रिसोर्स लगेगा, कितना मैन पावर लगेगा, वो सब हमको देना पड़ता है. Based on that, client will start approaching कि उसको डिप्लॉयमेंट कौन करके देगा, राइट? सो व्हेन इट कम्स टू डिप्लॉयमेंट, कई बार जो बड़े क्लाइंट्स है ना, those client will put a condition, let's say even if it is with Deloitte, same team, or IBM or TCS or Blaze client, किसी के भी पास जा रहे हैं, they are saying that I have my low level diagram, इसमें मुझको 50k सर्वर्स एप्लीकेशंस वगैरह बहुत लंबा काम है, ये अप्रोक्सीमेटली 5 years का मेरा काम है. I want 10 platform engineers from you. I already have an architecture team who will check with them or who will work with them or who will monitor them. I want one to manager from you. जो भी client का requirement होगा, client will share it. But doing this, client will share it. ये जो 10 platform engineers है ना, I want only certified engineers. I want only certified engineers. And then here comes the complete game. This company will say that engineers who are not certified, we are charging $20 per hour. However, the engineers, certified engineers, we are charging $30 per hour. But this client being a financial client and they do not have any issues with money, he says, no matter, I'm ready to pay $30 per hour for your engineer, but I want only certified engineers. So here the whole game starts. अब क्या होता है, 10 platform engineers company के पास या तो होंगे सारे, तो they will assign it internally. What if they are not? तब जाके hiring शुरू होती है. And when the hiring will start, यहाँ का जो, let's say this contract has been won by Blaze Clan ने ये bid जो है जीत ली. ठीक है, now Blaze Clan is providing 10 प्लेटफॉर्म इंजीनियर, एक मैनेजर एक्सेट्रा, एक टीम इसको हायर करनी है. 10 में से लेट्स से 2 उसको इंटरनल मिल गए. नाउ दे हैव टू हायर 8 प्लेटफॉर्म इंजीनियर्स, राइट? सो नाउ व्हेन दिस एचआर पर्सन, Blaze Clan के एचआर जब खुद सर्च करेंगे या किसी थर्ड पार्टी कंसल्टेंसी को देंगे, सो वन कंडीशन दे विल पुट व्हिच इज सर्टिफाइड इंजीनियर्स. जब ये लोग नौकरी पोर्टल पे सर्च करना स्टार्ट करेंगे, सो दे विल पुट a filter कि they want profile only with certified engineer. So this is how it helps. आप लोगों का प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होने में काफी हेल्प करता है, राइट? एंड नाउ बिकॉज सर्टिफाइड इंजीनियर के लिए क्लाइंट थोड़ा पे कर रहा है एक्स्ट्रा, तो ब्लेज क्लाइंट बोलेगा चलो यार मैं अपने कैंडिडेट को भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे कर दूंगा, नो इश्यूज. Are you getting it? Are you guys getting the business model completely, how it works? Yes. So इतना ही. अदर देन दिस सर्टिफिकेशन का कोई वैल्यू नहीं है. इट्स नॉट लाइक दैट कि आपके पास सर्टिफिकेशन है तो विदाउट इंटरव्यू आपको जॉब मिल जाएगा. विथ और विदाउट सर्टिफिकेशन नॉलेज टेस्टिंग आपकी इक्वली होगी, ग्रिल आप इक्वली होगी. इनफैक्ट द मोमेंट यू से यू हैव सर्टिफिकेशन, आपसे एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो जाता है बिकॉज क्लाइंट पेइंग यू मोर, ब्लेज क्लाइंट इज पेइंग यू मोर, सो आपसे एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो जाएंगे. देन दे विल आस्क यू दिस सिनेरियो दैट सिनेरियो, ये वाला क्वेश्चन, वो वाला मेथड, ये सब पूछा जाएगा. एंड इफ यू से नो, sometimes you will get a rebuttal also that you are a certified person. When you say you are a certified, which means you have covered this topic, then how come you don't know? ये भी एक उसका drawback है. But yeah, certification helps a lot. And talking about the package, I told you 12 LPA से 30 LPA तक का market का cap चल रहा है normally, right? This is for admin. Then if you want more than this, then you'll have to go for architecture level. Clear है guys? Till here? Yes. Any doubt? Anyone? No, Surya. Okay. Oh, Now let's go to the portal. When I say portal, guys, नौकरी मोस्ट ट्रस्टेड, बहुत सारे कॉल्स आपके पास यहाँ से आ जाएंगे, ठीक है? सो सबसे पहला नौकरी पे बना लेना. देन यू हैव मॉन्स्टर, टाइम्स जॉब एंड शाइन. और कोई आपको भी पता होगा, आई एम श्योर ये इज दिस इज समथिंग व्हिच ऑल ऑफ अस नो, एंड आई एम श्योर देयर आर सम पीपल हु नो बेटर देन मी. आप लोगों ने ज्यादा जॉब सर्च किया होगा, ज्यादा पता होगा. सम ऑफ यू आर कमिंग विथ एचआर बैकग्राउंड, अगर कोई आ रहा है, सो apply your own logic, apply your own thinking here, okay? So make sure you
prepare this and make sure that you are there on Naukri portal. Clear है यहाँ तक? Now how to tackle notice period? Let's discuss one thing. People who are there with 90 days notice period, it's difficult for you to get calls. 90 days को देखकर ही काफी calls नहीं आते हैं. So I would suggest you to put 60 days on your job portal. जिस पे भी डाल रहे हो, नौकरी वगैरह पे जहां पर भी डाल रहे हो, put it 60 days. 30 days मत कीजिए. 30 days डालोगे, इंटरव्यू क्लियर होता है वो they will ask you to join in 30 days. You won't be able to do it. Current company छोड़ेगी नहीं, new company extend करेगी नहीं. So don't do that. If it is 90 days, put this at 60 days. Start giving your interviews. The moment your technical round is clear, जिस दिन technical round clear का आपको email या call आ जाए, you put down your paper or you submit your resignation. ठीक है? Submit your resignation. Manager से discussion वगैरह बाद में कर लेना. I was discussing this with one of the students here offline. I will share it with you guys also. The moment you tell your manager, no matter how good he or she is with you, your friend जो भी है, the moment you tell your manager that you're planning to resign because you have been selected or you're start giving interview, 4-5 दिन वो आपके ऐसे ही वेस्ट कर देंगे. अरे वेन don't do it, I have some future plans for you, let me talk to my senior manager, let's see what I can do for you. Ultimately में होना कुछ नहीं है. Even if they revise your offer, 5-10% बढ़ाएंगे, मार्केट में 100% का हाइक मिल रहा है, एंड आपको Azure वो वैसे भी नहीं दे पाएंगे, राइट? सो यू आर नॉट स्टेइंग बैक. But the moment you tell them, they will ask you to wait for 4-5 days, जो आपके waste हो जाएंगे. And after he or she is saying कि wait, if you submit the resign that time, it looks a bit rude. तो उसके बाद वो 1-2 दिन के लिए भी फिर settle नहीं करेंगे. So don't do that. Submit your resume on your portal first. जिस भी तरह का portal आप use करते हो या आप email follow करते हो, जो भी process आप follow करते हो, submit it. Then go and talk to your manager. थोड़ा बहुत sorry वगैरह बोल देना, यार sorry without discussion मैंने कर दिया, थोड़ा urgency में था. And then start your discussion. But what will happen? आपका 90 days का countdown जो है ना, इसी day से शुरू हो गया. Then you keep on discussing. ठीक है? And the moment your technical round is clear, यहाँ से क्या होगा? Technical round clear होने के बाद आपका HR discussion, ठीक है, मैनेजरियल डिस्कशन, सैलरी डिस्कशन, ये अलग अलग है. 4 अलग चीज है, सैलरी अलग है. सैलरी डिस्कशन, नेगोशिएशन एंड ऑफर लेटर रिलीज, ये सब में 15-20 डेज वैसे ही निकल जाते हैं. एंड यू टेल दिस एचआर, जो भी नई कंपनी का एचआर है, दैट माय नोटिस पीरियड इज 60 डेज. सो द डे यू आर रिलीजिंग द ऑफर लेटर, माय जॉइनिंग डे शुड बी 60 डेज फ्रॉम दैट. तो जो भी जिस भी डेट आप ऑफर लेटर रिलीज कर रहे हो, लेट्स से दैट यू, मेरा आज टेक्निकल राउंड क्लियर हुआ, मैंने आज ही रिजाइन कर दिया मेरी करंट कंपनी में, तो इसके बाद 15 to 20 डेज लग जाएंगे मेरी न्यू कंपनी में मुझको ऑफर लेटर आने तक. बीच में ये सब होगा, एचआर डिस्कशन होगा, मैनेजर होगा, सैलरी डिस्कशन होगा. दे विल ऑफर यू समथिंग, यू विल से नो, दे विल कम अप विद सम अदर अमाउंट. आप बोलोगे ठीक है यार 50 मैं करता हूँ कम, आप 50 बढ़ा दो, ज्वाइनिंग बोनस दे दो, कुछ कर दो, XYZ ABC, किसी तरह का ये सब डिस्कशन में आपके 10-15 दिन और चले जाएंगे, राइट? सो दोस 15 days you have already earned. Now let's say that this happened today, technical round happened today, and I put my resignation 15th of April. HR discussion ये सब में हो जाएगा 30th of April. 30th of April को आपका सब जो है वहां से आपके इसका अप्रूवल वगैरह आने में भी टाइम लगता है, सब कुछ हो जाने के बाद भी. एंड देन आप लोगों को रिलीज करने में, यू एक्सेप्ट इट, आप डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे, सब में टाइम लग जाता है 10-15 दिन का. 30th of April को आपका ये आ गया, ऑफर लेटर आ गया. यू टेल देम दैट यू ऑफर रिलीजिंग द ऑफर ऑन 30th of April. So you give me the joining date 60 days from 30th of April, which is May, June, July, 30th of July. तो उसमें से आपने 10-15 दिन तो ऐसे ही आपने ऑलरेडी यहाँ पर आपके नोटिस पीरियड के निकाल दिए. रिमेनिंग जो 15 दिन है उसमें आपका करंट मैनेजर भी थोड़ा बहुत मान जाता है और नहीं होता है. सो योर न्यू कंपनी वो 10-15 दिन एक्सटेंड करके दे देते हैं. 1 हफ्ता वगैरह एक्सटेंड कर दे, 1 हफ्ता अपने करंट मैनेजर से कम करवा लो और 1 हफ्ता आप अपनी न्यू कंपनी से एक्सटेंड करवा लो. दिस कैन बी डन. So this is what you can do it. Clear है guys to everyone? 90 days वाले notice period. Yes. 60 days normal है, 30 days normal है, चलते रहो. Normally ये कर दो और that is fine. नौकरी पे, when you create your profile on नौकरी guys, make sure you come. Okay, I'll show it to you in next session. जब हम नौकरी पे जाते हैं तभी मैं बताता हूँ that every day what you have to do. ठीक है, यहाँ तक this is what I had to discuss. Anyone else? कोई और question है यहाँ पर इसके अलावा? Sohil, hello. Yeah, tell me Shika. Sohil, if they are asking for immediate joiner, like if they are like our technical round is clear and after that they are saying that you need to join within 15 days. नहीं, that won't happen. टेक्निकल राउंड जाने से पहले एचआर आपको पूछ लेगा कि आपका नोटिस पीरियड क्या है. यू टेल देम 60 days. Okay, but if we say 60 days and after like
we have cleared the technical round, then we told them that it's 90 days. Yeah, that's what So- I explained. The moment you clear your technical round, जिस दिन आपको feedback मिल जाए ना, आप resign कर दो, right? और देन उसके बाद उनके साथ उस HR से further discussion, manager round, salary वगैरह होने में 10-15 दिन वैसे ही निकल जाएंगे. Then you tell them कि मैंने 60 days बोला था ना, 60 days from the day you release my offer letter. उस दिन से 60 days गिना जाएगा. जिस दिन इंटरव्यू शुरू होता है तब से 60 days नहीं गिना जाएगा नई कंपनी के साथ. नई कंपनी से तो आप तब से 60 days गिनोगे जिस दिन आपका ऑफर लेटर रिलीज हो रहा है. Are you getting it? Okay, so we need to confirm with HR regarding this. Confirm with which HR and what? HR, like regarding the offer letter, that like a notice period will be starting. No. You're getting confused. Wait. Let me explain it again. Current company में आपका notice period है 60 days, right? I'm telling you, Right. put it as Okay. 60 days on नौकरी. Clear है यहाँ तक? Okay. Okay. Now, when the new company is HR, let's say you are in your company ABC. Existing company is your ABC. Your new company जिससे आप discussion कर रहे हो, that is 1, 2, 3. ABC में आपका actual notice period है 90 days. 90 days. But आपने नौकरी पे डाल रखा है 60 days. So according to new company, it is 60 days. ठीक है? Yes. Now new company will start when the HR calls you. You tell them it is 60 days. ठीक है? Fine. 60 days. But 60 days कब से शुरू हो गया आपकी न्यू कंपनी के लिए? जिस दिन HR ने कॉल कर दिया उससे वो 60 days नहीं गिनेंगे. न्यू HR will count 60 days जिस दिन वो आपको अपना ऑफर लेटर देगा ना, तब से 60 days. और यहाँ पर है आपका 90 days. तो यहाँ पर न्यू कंपनी में यू अरेंज योर इंटरव्यू. ठीक है? टेक्निकल राउंड हो गया आपका. let's say 1st of Jan को. 2nd of Jan को आपका ये आ गया, और let's say 15th और 29 दिसंबर को आपका ये होता है. 29 दिसंबर को आपका टेक्निकल राउंड हो गया. 1st Jan को यू आर नॉट रिजाइनिंग टिल हियर, यू आर नॉट रिजाइनिंग. ठीक है? रिजल्ट आपका आ गया दैट यू क्लियर द राउंड. आपको ईमेल आ गया. ठीक है? डू नॉट ट्रस्ट ऑन कॉल्स एंड एवरीथिंग. ईमेल, हाँ कॉल HR से आता है प्रॉपर तो ठीक है. कॉल आ गया आपको 1st of January को. 1st Jan को आपको कॉल आ गया दैट यू टेक्निकल इज क्लियर. टेक्निकल क्लियर हो जाता है तो आपको एक फेयर आइडिया आ जाता है कि इस कंपनी में आप काम करने वाले हो. कंपनी तो आपको ऑलरेडी पता होगी. लेट्स से दैट यू हैव अप्लाइड फॉर LTI और IBM वगैरह. यू नो कंपनी अच्छी है. पैकेज का एक अंदाजा आपको ऑलरेडी आ जाता है. HR इनिशियली बोल देते हैं कि यार 12 से हम ज्यादा नहीं दे पाएंगे या 12 से 15 के बीच में रेंज है. तो नो मैटर व्हाट यू सेइंग इन फ्रंट ऑफ HR, बट एक आप अपना डिसीजन बना लेते हो दैट यू आर जॉइनिंग दिस कंपनी, राइट? अगर टेक्निकल राउंड क्लियर हुआ है तो यू आर जॉइनिंग दिस कंपनी. नो मैटर मुझको 12 मिले, आई ट्राई कि मुझको 15 तक मिले, बट अगर 12 भी देता तो आई जॉइन दिस कंपनी. Azure मिल रहा है, अच्छी कंपनी का नाम मिल रहा है, आई एम हैप्पी विद इट. सो व्हाट विल यू डू देन? यू विल सबमिट योर रेजिग्नेशन हियर ऑन 1st of Jan. सबमिट योर रेजिग्नेशन ऑन 1st of Jan. ठीक है? तो आपका लास्ट वर्किंग डे क्या हुआ यहाँ पर? 1st of Jan से 1st of Feb, March, April. Guys, this session is about to finish. We'll join without any break. As soon as it finishes, we'll join without any break using the same link. Okay. So you will reply. Your last working day will be 1st of April. ये आपके न्यू एम्प्लॉयर को नहीं पता है अब तक. आपका न्यू एम्प्लॉयर को तो आपने बोला है that I have not resigned. इसके बाद टेक्निकल राउंड क्लियर होने के बाद आपके न्यू एम्प्लॉयर के जो फर्दर राउंड्स है, फर्दर राउंड से लेके आपका ऑफर लेटर रिलीज होने तक, इसमें 15 दिन लग जाते हैं. यहाँ तक कि आपका ऑलरेडी हो चुका होगा 20th Jan. ठीक है? यू रिजाइंड ऑन 1st of Jan. 20th Jan तक आपका ऑलरेडी 20 दिन आपने निकाल चुके हो. 20th Jan को जो आपका ये आएगा